So students, now let us continue with the poem. I shall return to this Bengal. Now this Bengal is the older Bengal that he always remembered with fondness, the beautiful sights of Bengal, the Bengal of the pre-partition days. So he wants to return there, maybe not as a man, but maybe as a manna or a flying kite. So this we did in the first paragraph. Now let us move on to the next paragraph. So perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze. So when the people will find him in that Bengal, क्योंकि this Bengal कह रहे हैं, so उत्थे शायद perhaps you will also, so now in this passage he will be recalling the beautiful sights that he was a witness to in his childhood or before the time or the time when he was in Bengal. Perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze. So perhaps you will also see a glass fly. Now glass fly is the Bengali, it's an insect. It is a common species of green beetle in Bengal. Kanch poka enu kende Bengal de vich. So you must have a look at the glossary. It is on page number 12. Uthe meaning ditta hoya dekho enu. Or perhaps you will see a glass fly ride the evening breeze. So maybe you will also see a glass fly riding the breeze, or hear a barn owl from the silk cotton tree. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ maybe a glass fly will be there, or maybe a barn owl. Now barn is a building where the corn is stored, where the farmers store their crop also, and or hear a barn owl call from the silk cotton tree. So maybe you will also hear a barn owl calling from the silk cotton tree. So here is a picture of the silk cotton tree. A little child toss rice grains on the courtyard grass. Or maybe you will see a little child tossing rice grains on the grass grown in his courtyard. कि वेड़े भी जिथे घाह उगी हुई है, maybe you will also see a little child throwing rice grains on the grass of his courtyard, or a boy on the Rupsa's turgid stream steer a dinghy with tone white sail. Or maybe you will also see a boy on the Rupsa river. So again, Rupsa is the name of a river. So maybe you will see the Rupsa river and a boy steering a dinghy. Now dinghy is a type of small boat, and it is a small boat, and it is many times it is carried in a larger ship for use as a lifeboat. So choti ji kishti hegi. So maybe you will also see a young boy steering a dinghy boat hegi jedi. So in the Rupsa river with torn white sail. ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਲ ਕਲੌਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ. White egrets swimming through red clouds to their home in the dark. Now egrets ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਦੇਖੋ, so egret heron ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So you will also see ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So perhaps you will also see white egrets swimming through red clouds. ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ
पार हुंदे होए कित्थे जा रहे हैं? To their home in the dark. So because it is the time of sunset, so even the clouds are colored red. And the egrets, the herons are flying through those clouds, and they are going towards their homes, which will be in the dark. So ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ dark ਚ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ after the sunset darkness will follow, and by the time the egrets will reach their homes it will be dark. You will find me among their crowd. और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ. You maybe I will be there flying among the egrets, and maybe you will see me in the form of an egret, and I will be also flying towards my home. So now I think the poem should be clear to you. And now what kind of questions may come from this? So first is, in what form will the poet return to Bengal? ने ਜਿਹੜੇ short answer questions है देखो इदां दे आ सकदे. In what form will the poet return to Bengal? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰੋਗੇ? फर्स्ट पैरा चो. सो देखो इनू फर्स्ट पैरा किहड़ी शक्ल चो बंगाल वापस आना चाहता है? पहला क्या आऊगा? मैना और फिशिंग काइट और क्रो और मे बी अ डक that is slowly drifting on, that is floating on the water of जलंगी. सो ये वाली सारिया फॉर्म्स दे विच वो वापस आना चाहता है. और नैक्सट तुसी किस तरह का आ सकता तुहानू? हुणे एग्रेट्स है, ये डिंगी है, अगेन रूपसा. एंड आई होप नाउ द पोएम इज क्लीयर टू यू. हुण देखो नैक्सट किहड़ा आ सकदा जिहड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. फर्स्ट किहड़ा सी, इन वॉट फॉर्म विल द पोएट रिटर्न टू बंगाल. और होर किहड़ा आ सकदा है? what kind of surroundings will point to the poet's presence when he comes back. सो किहड़ियां किस तरह दियां कित्थे पता लगूगा कि इत्थे पोएट मौजूद हो सकता है? किस तरह दी सराउंडिंग्स दे विच होगा? किदां दियां सराउंडिंग्स दे विच होगा? नैचुरली in those surroundings which he found to be very beautiful during his lifetime. So naturally he will be coming back to those surroundings only, क्योंकि आना ही वो कित्थे जांदा जिहड़ियां जगह उन्होंने बहुत सोहणियां लगदियां सी. सो तुसीं इत्थे की दसोगे? देखो क्वेश्चन की है, what kind of surroundings will point to the poet's presence after he comes back. सो किहड़ियां सराउंडिंग्स हैगियां जिथे वो वापस आना चाहता हैगा? किहड़े किदां दे सीन्स हैगे? ये तुसीं तुहानूं यू विल फाइंड दिस आंसर फ्रॉम योर सेकेंड पैसेज. जिथे के बान आउल, जिथे के ग्लास फ्लाई हवा दे उपर उड़ रही है, और जिथे के बान आउल सिल्क कॉटन ट्री जिहड़ा उल्लू हैगा वो सिल्क कॉटन ट्री तो बोल रहा है. होर किहड़ियां सराउंडिंग्स दे विच पोएट नूं लभ्या जा सकेगा? Where a little child is tossing राइस ग्रेन्स ऑन द कोर्टयार्ड ग्रास. जिथे कि एक छोटा बच्चा चौलों के दाने खिलारदा पिया है अपने वेड़े दे विच उगी घाह दे उपर. और अ बॉय ऑन द रूपसाज टर्जिड स्ट्रीम स्टीयर अ डिंगी. या एक जिथे कि एक लड़का की कर रहा हैगा, एक बोट चलाने की कोशिश कर रहा है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिड? टर्जिड का मतलब की है? जिथे पानी बहुत ज़्यादा होवे. स्वोलन मतलब कि जिथे रिवर का जिहड़ा आकार है बहुत वड्डा होवे, बहुत पानी होवे जिथे. वाइट एग्रेट्स. और किथे वो इन विच सराउंडिंग्स द पोएट मे बी फाउंड? वेयर द वाइट एग्रेट्स आर रिटर्निंग टू देयर होम्स आफ्टर द सन हैज़ सेट, and they are flying through the red clouds, the clouds colored by the setting sun. Now another now these
2 short answer questions will be sufficient. Now, a long answer type question, write a critical note on the poem. So here you will write about his melancholy. Melancholy the matlab ki the sadness and the loneliness that pervades his poetry. So thoda ja poet bare das ke fir tusi ki dassonge, why was he a sad and lonely poet? So ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ that he very much wanted to go back to the older Bengal, the Bengal of pre-partition days. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ after the partition of the country it went to Bangladesh, that you may write. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ. ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਵਾਈਡਲੀ ਰੈਡ ਪੋਇਟ ਆਫਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੋਇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੈ. ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਾ ਦਾਸ. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ that he through his poetry he makes the ordinary turn into extraordinary. He makes the ordinary sights look extraordinary. ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ